Assalamualaikum dear student, I hope you are good in health. Today our English lecture which has been taken from the New Oxford Modern English class 5 unit number 6 page number 55 and the topic name is Perseus and Gorgon. Perseus is the hero of the story and the Gorgon as a witch or a monster which will be killed by the Perseus. But before going to my story, I will show you some picture. This is a picture of Perseus and this is a picture of the Gorgon. You can see this is the hideous, it's a very extremely ugly witch. So class, before going to start my lesson, I will tell you the story is a Greek myth. So what is a myth? Myth क्या होती है? Myth is just like a tale which transfer from generation to generation, but there is no authenticity in this story. We don't have any references which can prove that the story is a true or not. मिथ कहने के एक लोक कहानी की तरह होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, मगर हमारे पास कुछ भी एविडेंस नहीं होते जो प्रूव कर पाएँ कि ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं या हमें सुनाई जा रही है ये सच है कि नहीं. सो यू कैन से दैट द ग्रीक myths आर टोटली बेस्ड ऑन फिक्शंस, आर टोटली इमेजिनरी स्टोरी. इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती. So in Greek myth, there is a hero who always fights against the supernatural forces, and these forces are most of the time are evil forces. Now move toward the main lesson, the reading and the translation of the story. So student, open your book, page number 55, and take a pencils in your hand to note down the difficult meaning of the word. So I will start the reading. In the northern sky, शुमाली आसमानों में, if you look up, अगर आप ऊपर देखें, on a clear night, साफ रात में जब शुमाली आसमानों की तरफ आप ऊपर देखें, you can see, आप देख सकते हैं, a constellation. The pronunciation is student, constellation mean झुरमुट of the star, सितारों का, called Perseus, इसका नाम Perseus है. तो आपको सितारों का झुरमुट नज़र आएगा जिसका नाम Perseus है. The constellation, इस झुरमुट का नाम is named, दिया गया after a Greek hero, एक यूनानी हीरो के नाम पर गया. ठीक है, इस झुरमुट का नाम एक यूनानी हीरो के नाम पर रखा गया. Here again student, I have a picture. You can see there are so many stars and when we join these stars they are making a picture. जब हम इन सितारों को जोड़ते हैं तो ये एक पिक्चर बना रहे हैं और ये एक स्टार साइन बन जाता है और इसका नाम Perseus है. तो Perseus बेसिकली एक यूनानी हीरो था. He was the favorite child of the god and goddesses according to the Greek. When he was a baby, जब वो एक बच्चा था, Perseus and his mother Danae उसकी माँ was sent, भेज दिया गया, to an island, एक जजीरे पर, called Seriphos. जब वो एक बच्चा था, Perseus और उसकी माँ Danae को एक आइलैंड जजीरे पर भेज दिया गया जिसका नाम Seriphos था. So a kind man, एक रहमदिल इंसान called Dictys, जिसका नाम Dictys था, allowed them, इजाज़त दे दी उन्हें, to live on his land, उसकी ज़मीन पर रहने की. Dictys brothers, Dictys का भाई Polydictys was a king of the island, जो कि उस जजीरे का बादशाह था. Dictys का भाई Polydictys जो उस जजीरे का बादशाह था. Polydictys was a cruel, Polydictys एक बेरहम and evil tyrant, शैतान सिफ्त आमिर था. Evil tyrant, zalim hukmran. Students, in this passage you can see that the Perseus, Danae, Dictys, Polydictys are a proper noun. They are written in capital letters because proper noun always begin with the capital letters. There are other nouns like island, mother and brother. They are also a noun, but they are a common noun. That's why they are written in small letter. Perseus grew up, बड़ा हुआ, into a strong, मजबूत young man, जवान आदमी. Perseus बड़ा होकर एक मजबूत और नौजवान आदमी बना. He worked hard on this land. वो उस ज़मीन पर सख्त मेहनत करता था. And was very protective, ख्याल रखने वाला of his mother, अपनी माँ का. और वो मेहनत करने उस ज़मीन पर बहुत मेहनत करता था और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखने वाला था. Students, in this sentence, worked is a verb which is the second form of the main verb work. So there is no helping verb
And the second form of the verb to show that this is a past simple tense. One day, एक दिन, the mean selfish कमीना king passed by their house, उनके घर के करीब से गुजरा, and saw देखा Perseus mother, Perseus की माँ को. एक दिन वो कमीना बादशाह उनके घर के पास से गुजरा और उसने Perseus की माँ को देखा. Because students, the Perseus mother Danae was a very beautiful lady. Here you can see the comma after the name of the Perseus, which is a apostrophe sign which show the possession of the noun. So ये जो noun की मलकियत को शो करने के लिए apostrophe sign और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है. बट यहाँ हम सिर्फ comma का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि Perseus के नेम के लास्ट पे already s present है. So avoid the repetition. We are not putting s after the comma. He wanted, वो चाहता था, to marry her, उससे शादी करना. वो उससे शादी करना चाहता था. He was not a good man, वो एक अच्छा आदमी नहीं था. So इसलिए Perseus tried, कोशिश करता था, to protect his mother, अपनी माँ को बचाने की. इसलिए Perseus अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता था. So student, that's enough for today. See you in next lecture and till then Allah Hafiz.